हाय गाइस, दिस इज वर्तिका सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पाइथन में सीखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सर, पहले हम यहाँ पर तीन यूजर इनपुट लेंगे। प्रिंसिपल p इज इक्वल टू int इनपुट एंटर योर प्रिंसिपल, रेट यानी r इज इक्वल टू int inputs enter rate of interest and time period equal to int input enter the time period elapsed. ओके, अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे। अमाउंट इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r बाई 100 का पावर t, एंड यहाँ पर हम प्रिंट करा देंगे प्रिंट योर अमाउंट is A and compound interest is equal to amount minus principal. Okay, so finally हम print करा देंगे यहाँ पे print your compound interest is CI. So हमारा कोड यहाँ पे तैयार हो चुका है, इसको हम रन करके देखते हैं। Enter your principal 1000, enter rate of interest 2, time period elapsed years में है 2, your amount is 1040 and your compound interest is etna. So thank you guys for watching this video. Bye bye.